Now today we will find that fraction decimal expansion for the fractions having denominator ending with 1. Ending with 1. This is the term. We can say the recurring decimals, expansions of quarter fractions having denominators ending in 1. So here is the method 1. For example, suppose the question is convert 5 by 21 into recurring decimal. Step number 1. As 21 is nearest to 20, that is 21 is equal to 20 plus 1, right? 21 is equal to 20 plus 1. So, or in other words, we can write it like 20 minus minus of 1. So in this case, we divide 2 into 5 and put 5 by 21 is equal to 0.2. This is a part of the quotient and this is the part of the remainder. So here first of all we have divided 5 by 2 and we have got quotient, 2 quotient and remainder is 1. तो जब हम 9 के साथ हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो 9 से खत्म होते थे, then we took it as a next dividend. But in this case 12 is not the dividend, right? Step number 2. Now when we divide by 2, we divide not into 12 but into this number 1 and 2. 2 के ऊपर क्या है, विनिकुलम ले लिया हमने, and this is equal to 8, which is the next dividend which we want to divide with 2. Right? With 2. That is every time the last figure or quotient figure हमने लिख लिया. Every time the last figure or quotient put down is considered, जो भी हम put down का मतलब जो भी हम लिखते हैं is considered negative, उसको हम negative consider करेंगे. विनिकुलम का मतलब ही क्या है, हम उसको negative consider करेंगे. ठीक है जी. So अब हमारा क्वेश्चन है 8, डिविडेंड है 8. Now step number 3. Then 2 into 8 gives 2 into 8 gives. So यहाँ पे 5 by 21 as it is. ये पुराना स्टेप था. अब हमने जब 8 को डिवाइड किया 2 से तो 4 रिमाइंडर और क्वोशंट 4 क्वोशंट और रिमाइंडर 0 आप साइड पर लिख सकते हैं. ये डिवाइडेड बाय 2 implies here quotient is 4 and remainder is 0. उस हिसाब से हमने लिख दिया.
Now we have the step number 4. Now we count, we take 4 as 4 बार, क्योंकि हमने हमारा इसमें मेथडोलॉजी क्या काम कर रही है कि जो भी कमिंग क्वेश्चन आ रहा है विद द फिगर वी पुट डाउन, उसका हमने नेगेटिव लेना है। तो 4 का हमने नेगेटिव ले लिया 4 बार, एंड 4 बार डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 बार। सो इट देयरफॉर इसी के सामने 5 by 21 इज इक्वल टू 0। अगेन 2 4 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, और अगेन हेयर अब यहाँ पे अब आपका क्वेश्चन कितना आएगा 2 बार, और रिमाइंडर क्या आएगा 0। स्टेप नंबर 5। नेक्स्ट, अब 4 का अगर विनिकुलम नेगेटिव साइन 4 बार आ रहा है तो 2 बार ऑलरेडी नेगेटिव है, तो उसका नेगेटिव का नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। नाउ नेक्स्ट, टेक द नेगेटिव ऑफ 2 bar, that is 2, and 2 divided by 2 is equal to 1. So 5 by 21, again you will write this is 0 point, then 2 4 2 bar 1, and here is quotient 1 0 0, right, and here is again 0. Now again step number 6. Now again step number 6. हाँ जी, is it clear? यहाँ तक clear है सबको? Next step में now next you will take as a 1 bar. We take 1 as 1 bar, and 1 bar divided by 2 is equal to 0 remainder 1 bar. आप यहाँ भी लिख सकते हैं अगर आपने लिखना है तो remainder 0. So therefore 5 by 21 is equal to 0.2142 bar 1, and here is 0 and here is 1 bar. So बाकी जो सारे remainders हैं वो 0 है. Now the next number, step number 6. Step number 6. Now the next we have 1 10 bar, कि 1 bar already था, 0 bar ले लिया, तो 10 bar as next dividend. Therefore 10 bar divided by, and 10 bar divided by 2 is equal to 5 bar remainder 0. So it implies 5 by 21 is equal to 0.242 bar 1, and then is 1 bar 1, then 0, then here is 5 bar, and here you have as a 1 bar, here is 1 bar, right. Now 5 bar, अब अगला जो आंसर आएगा अब इसका नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा. Now take the negative of 5 bar, which is equal to 5, and 5 divided by 2 is again 2 2s are 4 and remainder 1. Therefore 5 by 21 is equal to 0.242 bar 1 0 5 bar and 1 2. तो जहां से अब अगला जो कैटेगरी में therefore step number 7. So next we have the same, जहां से हमने शुरू किया था. So next we have as dividend. ठीक है जी. So the procedure will go on. Therefore the procedure will go on according to the previous steps. Okay, so we stop the calculation here. Therefore 5 by 21 is equal to 0.242 bar 1,
0, 5 bar, 2, and here is 1 bar, and here is 1, and here is also 1. And the rest of the places we have 0. Right now, devinculate. So this is this यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक बेल्ट है decimals की जो repeat करेगी. So now devinculate decimal expansion. Therefore, 5 by 21 is equal to. हाँ जी, यहाँ से we will not take this one because this ये वाला reckoning decimals की अगली बेल्ट में शुरू होगा. So 5 का complement 5. Here is 9. Here is 0. यहाँ पे खत्म हो गया. अब 2 bar is 8. Here is 3. Here is 2. So this is your answer. हाँ जी, is it clear? हाँ जी, क्लियर हो गया.